warm welcome to all my viewers in today's class. Up to exercise 13.7 we have discussed in the previous videos. Exercise 13.8, that is totally based upon volume of sphere and volume of hemisphere, that we are going to discuss in this video. Okay, this formula you must know before starting this exercise. Volume of sphere, a solid sphere, okay, which is filled from inside. जैसे आयरन की कोई बॉल आपके पास होती है, ठीक है, that is a sphere. Hemisphere, just cut that ball into two equal halves. जब आप उसको हाफ में कट कर देंगे, that will be hemisphere. Hemi means half, sphere means a sphere, यानी half of sphere is called hemisphere. And volume of that, कि उसके अंदर वजन कितना है, वो कितना भरा कितना हुआ है, that is known as the volume of particular hemisphere. Okay, so these two formulas are important from doing this exercise. Now we will begin with question number 1. Let me show you question number 1 from my book. Find the volume of the sphere whose radius is given. There are two parts in that. One, 7 centimeter, it is radius, and in another part it is 0.63 meter. Okay, there are two parts in this question. What is given to us? That is radius. Radius is equal to 7 centimeter. We have to find out volume of sphere. Volume of sphere says 4 by 3 pi r cube. That is 4 by 3 pi, we will use 22 by 7, multiply by cube of 7, that is 7 into 7 into 7. 7 and 7 they can cut by the table of 7. Now we can multiply. It is 28, it is 88, multiply by 49, divide by 3. When you will divide, you will get 4312 divided by 3. When you will multiply, divide 4312 by 3, you will get 1437 is to 1 by 3 centimeter cube. It is the volume of that particular sphere whose radius is equal to 7 centimeter. Another part of it here, second part of it, the volume is 0.63, sorry, radius is equal to 0.63 and it is in meter. Same formula we will use. Volume of sphere, that is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi will be taken as 22 upon 7, r cube, that means 0.63, multiply by 0.63, multiply by 0.63. By the table of 7 it will go 0.9. Okay, then by the table of 3 it can go 0.21. Now you can multiply all. 88 multiply by 0.9, multiply by 0.21, multiply by 0.63, and nothing is left as denominator. If we multiply all, we will get 10.478 meter cube as our volume of that particular sphere. Okay, these are the parts in question number 1. They have given us radius in both the parts. We have found the volume of it. Let us see question number 2. Question number 2 is also the same. Find the amount of water displaced by a solid sphere ball of diameter. Same question, only the diameter is given. First, we will convert this diameter into radius by dividing it by 2. Same in this part also. This question and second question both are same. Here diameter is equal to 28 centimeter. Let me draw a line so that I may do both the parts here. And here diameter is 0.21 meter. Okay, now radius will be half of it, that is 14 meter. Is it centimeter? Okay, 14 centimeter. Let me finish this part. Volume of sphere, 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi will be 22 upon 7, multiply by 14, multiply by 14 and multiply by 14, because radius cube and radius is 14, it is 2. Now 22 multiply by 2, it is 88, multiply by 14, 2 is 28, multiply by 14, divide by 3. Multiply this all and divide it by 3, you will get 11,498.66 centimeter cube will be the volume of that particular
water that is to be displaced by the solid spherical. Okay, if you want to convert our answer, we can convert 11,498.7 centimeter cube. We have done round off this. Okay, यहाँ पे 5 से ज़्यादा था, we can make it 7 if it is more than 5. Now for the second part also, we will find radius first. Radius will be 0.21 divided by 2 meter. अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, it will be 0.105 meter. Okay, now the water displaced, or we can write here volume of sphere. Same formula can be used, that is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi is 22 upon 7 multiply by 0.105 multiply by 0.105. Okay, if you will multiply all the numbers and if you will divide it by 21, you will get 0.004851 meter cube. When you will multiply all the numbers and you will divide by 21, you will get 0.004851 meter cube. Okay, multiply all the number. Otherwise, if you want to cut it by the table of 7, it can also be cut. I hope you have understood both the parts, because nothing was much differences were not there in question number 1 and 2. Only we have to put the values in the formula directly. Okay, let us see question number 3. Question number 3 is the diameter of the metallic bowl. Let me show you the question from the book. The diameter of the metallic bowl is 4.2 centimeter. What is the mass of the bowl if the density of the metal, this is density given, is 8.9 gram per centimeter cube. Density always be given like that, gram per centimeter cube or kilogram per meter cube, like that. Okay, density is given. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले one formula we should be knowing. This is question number 3. एक आपके पास फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू, या हम ले सकते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. और अगर हमें मास निकालना है तो वी कैन राइट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या एक्चुअली, व्हाट इज़ द मास ऑफ द बोल. हमें मास निकालना है, डेंसिटी इज़ गिवन टू अस. निकालना क्या है हमें निकालना है वॉल्यूम. जस्ट सी, डेंसिटी इट इज़ गिवन, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. वॉल्यूम हमें निकालना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा, मास ऑफ मेटेलिक बोल. नाउ वी विल राइट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी की वैल्यू आपको कितना गिवन है, इट इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, और हमें क्या गिवन है, डायमीटर. डायमीटर गिवन है तो वॉल्यूम निकालना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अस. 4.2 सेंटीमीटर. रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. That is 4 by 3 pi r is 2.1 multiply by 2.1 multiply by 2.1. Okay, it can be cut 0.3, it can be cut 0.1. If you will multiply the all, you will get 38.808 is the volume of that particular metallic bowl. But we have to find out what mass. And the formula of mass is equal to volume multiply by density. Okay, this is new formula, but you please memorize it, because this is science formula actually, but it can be used in the context of mathematics also. What is the value of volume? That is 38.808 multiply by what is the value of density, that is 8.9 gram. Multiply this two, you will get 345.39 gram. This is what the mass of that particular that metallic bowl. Okay, you can write mass of metallic bowl is 345.39 gram. This is mass of the bowl. Okay, this is how we can solve question number 3. Let's move on to question number 4.
Here we have question number 4. The diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? Okay, fine. Now the diameter हम let करेंगे. Let the diameter of moon is equal to d1. Then the radius of moon will be d1 upon 2. Here the diameter of earth, let the diameter of earth d2 और उसका रेडियस कितना हो जाएगा? Radius of earth will be d2 upon 2. Now what the question says, the जो आपके पास the radius it will be d2 upon 2. Now the question says the radius of the moon upon 2. Radius of the moon, sorry, the diameter of the moon, that is d1, is 1/4 the diameter of earth. यानी diameter of moon is 1/4 the diameter of earth, d2. That means our d2 is equal to 4d1. This is what we have to keep in mind. Okay, what we have to find out? We have to find out fraction. Fraction of what? Fraction of volume of moon, volume of earth will be there, volume of earth divided by volume of moon. Okay, now we can put here 4/3 pi r cube. R, if r d2 I have taken, then I will take here r2. अर्थ का मैं r2 ले रही हूँ. 4/3 pi r1 cube. Now 4/3 will be cancelled, pi will also be cancelled. अब यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर d2 हमारे पास 4 है, इसका अगर हम हाफ कर दें, d2 का हाफ अगर हम कर दें यहाँ पे, तो ये r2 आ जाएगा, और इसका हाफ अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? 2 of d1. Okay, now what can we do here? r2 is equal to twice of d1 square cube, sorry, and it will be, here I will take diameter of that, and r1 will be taken as, if I take d1 of that means d2 upon, it will be half of that. If I divide it by, then it will be d2 square. If I take d2 square upon 8, it will be 8, yes, d2 square upon 8, and here it will be d2 square upon 512 square. How it is? See, volume of earth, let me show you, let me make it clear from here first. Volume of earth अलग अलग हम निकाल के दिखा देते हैं. वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आप यहाँ आर को आप क्या लिखेंगे? 4/3 पाई, आर को हम लिख सकते हैं डायमीटर का हाफ. ठीक है, 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 8. जैसे यहाँ पे हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऐसे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मून, फिर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे. दैट विल बी मोर ईजी. दैट इज़ 4/3 पाई. अब ये क्या है उसका? ये तो उसका d2 अपॉन में 8. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाफ रेडियस होगा, रेडियस, और रेडियस का 4 टाइम है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 8 क्यूब. 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन d2 क्यूब अपॉन 512. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को हम ऊपर रखेंगे, इट विल बी 4/3 d2 क्यूब अपॉन 512. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ
और वॉल्यूम ऑफ मून हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ मून विल बी, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इट वॉज वॉल्यूम ऑफ मून, आई एम सॉरी, वॉल्यूम ऑफ मून निकाल रहे थे ना हम यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी D2/8 क्यूब ऑफ दैट, सिर्फ D2 का क्यूब है, और नीचे क्या आ जाएगा D2/512। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, D2 का क्यूब डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल करेंगे, 512 विल बी अप एंड D2 का क्यूब नीचे, दिस विल बी कैंसल्ड, 8 1 जा 8 एंड इट विल गो ऑन 64। सो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ दैट, 64:1। लेट मी मेक दिस क्वेश्चन मोर क्लियर अगेन। सबसे पहले आपको डायमीटर गिवन है मून का, हम यहाँ से मून का रेडियस निकाल लेंगे D1, फिर अर्थ का आपको डायमीटर गिवन था D2, उसका रेडियस निकालना। इस सारे को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 4/3πr³। आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, D2, अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो D2/2, ये रेडियस था, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी D2/2। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो D2 का क्यूब एज इट इज़ और 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मून, दैट इज़ 4/3πr³। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया था कि जो वॉल्यूम है आपके पास, जो D1 है वो किसके इक्वल है, D2/4 के इक्वल है। अगर आप रेडियस निकालेंगे R1, इट विल बी हाफ ऑफ D2/4, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, D2/8 के इक्वल। द सेम आई पुट हियर, D2/8, इसका क्यूब करेंगे तो D2 का क्यूब 8 का क्यूब 512। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। R2 आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और ये R1 आ जाएगा, ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। R2 का क्यूब जब आप करेंगे दैट इज़ आपके पास बचेगा 512, और यहाँ से आपके पास बचेगा 8। जब आप इनको कैंसिल करेंगे यू विल गेट 64:1। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी शो यू how many liter of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 can hold। that means we have a hemispherical bowl और उसका diameter given है, पूछ रहे हैं how many liters of milk it can hold। first we will get our answer in centimeter cube, then we have to convert it into liters। diameter is given, radius we have to find out। okay, now see question number 5। diameter is equal to 10.5 centimeter, radius will be half of it, radius if we will divide it by 2 it will be 5.25 centimeter। first we will find volume of hemisphere, that is 2/3πr³, 2/3 value of pi will be 22/7, r is equal to 5.25 multiply by 5.25 multiply by 5.25। we can multiply the all, if you will multiply, if you want to cut it you can cut it by the table of 7, if you want to cut it again you will get cut it by the table of 3। now multiply this, 44 multiply by 0.25 multiply by 5.25 multiply by 5.25, multiply all the numbers, then you will get 303.1875 centimeter cube। here we got our answer in centimeter cube, but we have to find out our answer in liter। hemispherical bowl can hold milk। fine, that is equals to हमें ये पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम 1000 लीटर, अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू डिवाइड आवर आंसर बाय 1000। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 303.1875। अब हमारा आंसर अगर हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे वी विल गेट आवर आंसर इन लीटर। जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.303 लीटर। लास्ट वाला आप इरेज कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू रियली डू, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू like the video, share it with your friends if it is useful for them. Please do not forget to subscribe my channel if you are new, or if you haven't subscribed it yet. Then we will meet in the next video with the remaining question of same exercise. Till then, goodbye, and I just want you to take care of yourself.